Everyone, I'm Shivangi, and I'm back with another lecture on verbal ability from Ranker's World. पिछले लेक्चर में हमने फॉर्म्स ऑफ वर्ब सीखे थे. Now, what are forms of verb? Forms of verb होता है कि how a form a verb changes according to the sentence. All right, according to the time of that sentence. It takes different kinds of forms. So हमने last time हमने देखा था कि हमने एक verb लिया था, that is right. ओके, और हमने देखा था कि अकॉर्डिंग टू सर्टेन वर्ड्स एक वर्ब कैसे चेंज होता है. तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं. हम एक बार वापस उसको रिवाइज कर लेते हैं और हम देखते हैं कि जो राइट है उसके 5 फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है. सो राइट, दिस इज द वर्ब दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट. सो विल सी कि इसका जो फर्स्ट फॉर्म है वो क्या है, विच इज बेसिकली द बेस फॉर्म. द बेस फॉर्म रिमेन्स द सेम एंड हेंस वी विल राइट राइट. Second is past tense, the past form of the verb. That is write का जो past होगा उसको हम कैसे लिखेंगे? We will write it as wrote. ठीक है, write का past क्या हुआ? Wrote हुआ. The third form of verb here is the past participle. Okay, so before the third form of verb is used, we have to use certain helping verbs. ठीक है, और whenever we are using the third form of verb, has, have, was, इन सब के साथ जो use होता है, so write changes to written. The fourth form of verb is when the verb is verb के साथ add हो जाता है ing. So the word write becomes writing, and writing is the fourth form of the verb write. Then fifth form of verb. मैम फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब में क्या होता है? सो फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बताता है सम एक्टिविटी, सम वर्क दैट इज बीइंग डन इन द प्रेजेंट टाइम. ठीक है, उसमें क्या होता है कि उसके साथ एस या ई एस जुड़ जाता है एंड दिस इज थर्ड सिंगुलर पर्सन. ही, शी, इट जब भी होता है हमारे पास, तब जो हमारा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है उसके साथ एस या फिर ई एस जुड़ जाता है. सो हियर राइट बिकम्स राइट्स. ठीक है मैम, हमने ये 5 फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़े थे. हमने एक और चीज पढ़ी थी. जो हमने एक और चीज पढ़ी थी वो क्या थी? वो थी हेल्पिंग वर्ब्स. हमने देखा था कि जो एक वर्ब होता है, इट्स टू काइंड्स. देयर इज हेल्पिंग वर्ब, देयर इज द मेन वर्ब. What is a main verb? Well, main verb shows the action, the main action that is happening. For example, run, play, write, swim, go, all of those are the main verbs. What is a helping verb? Well, a helping verb is a verb that is used before the main verb and it shows, when that action, when that verb is actually happening. It tells us about the period of time. Okay, for example, is, was, will, all of these words, they are helping verbs. All right, यहाँ तक अगर आपको कोई भी doubts है, so you can go back to the first lecture and have a look at it. Here in today's lecture we will be studying about the different cases जिसमें से हमारे questions बनते हैं. एक बार आप वो foundation videos कर लीजिए. Now then you come to the second part of the video. Okay, so let's begin. हमारे स्लाइड पे लिखा हुआ है एक वर्ड दैट इज मॉडल्स. व्हाट इज अ मॉडल? अ मॉडल इज अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ हेल्पिंग वर्ब. ओके, इट इज अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, वो बताता है कि एक स्पीकर या सब्जेक्ट का एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्ब या टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट कैसा है. ओके, so it tells us about the speaker's mood or attitude towards an action. An action is a verb. It indicates things like ability, permission, obligation, possibility, etc. Now, let's have a look at the common models that are used. These are can, could,
will, should, shall, must, etc. ठीक है? So whenever you're using models, one thing that you have to keep in mind is that after the usage of every model, you will use the first form of verb. मैम कैसे? Example देखते हैं यहाँ पे. It's written she can write. Now let's identify the different parts of speech here. Okay, she is a pronoun and it is also the subject. She can. A can is a मॉडल और मॉडल के बाद हमने जैसे पढ़ा हमने बोला कि उसके बाद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विल कम हेंस राइट यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए हम नहीं बोलेंगे कि शी कैन राइट्स दैट इज रॉन्ग ओके शी कैन राइटिंग भी नहीं होगा वी विल ऑलवेज यूज द फर्स्ट फॉर्म दैट इज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑलराइट आगे बढ़ते हैं आगे हम देखते हैं कि लिखा हुआ है इन्फिनेटिव वर्ब्स मैम इन्फिनेटिव वर्ब्स क्या होते हैं वेल इन्फिनेटिव वर्ब्स आर द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब दैट आर प्रीसीडेड बाय टू कि जो भी वर्ब होगा उससे पहले टू लिखा हुआ है टू गो टू ईट टू रन टू स्विम etc so whenever we're using infinitive verbs the to form of the verb we will always use the first form of the verb after to मैम एग्जाम्पल दे दीजिए यस example है I want to write. So whenever we're using the infinitive verbs, you have to, keep in mind that the infinitive verb will always show some, purpose or some desire. Okay? कि I want to write. I want to go. कि, एक desire है, एक purpose है, ठीक है? और वो infinitive verb जताता है. ठीक है? So one thing यहाँ तक हम एक बार याद कर लेते हैं कि जब भी हम मॉडल्स यूज करते हैं और जब भी हम इन्फिनेटिव वर्ब यूज करते हैं तो हमेशा मॉडल के बाद और टू के बाद हम यूज करेंगे द फर्स्ट फॉर्म दैट इज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब ठीक है इजी नो रॉकेट साइंस हियर लेट्स मूव फॉरवर्ड सो यहाँ पे लिखा हुआ है पैसिव वॉइस ओके सो यहाँ पे लिखा हुआ है पैसिव वॉइस दैट इज द V3 मैम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस एग्जैक्टली होता क्या है हम आने वाले लेक्चर्स में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ेंगे ओके मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक ब्रीफ में आपको एक समझा देती हूँ कि एक एक्टिव वॉइस क्या होता है और एक पैसिव वॉइस क्या होता है सो व्हेनेवर हम हमेशा यूजुअली एक्टिव वॉइस में बात करते हैं ओके जब भी हम एक्टिव वॉइस यूज करते हैं उसमें हम ये देखते हैं कि जो एक्शन हो रहा है ठीक है जो भी सब्जेक्ट एक एक्शन कर रहा है वो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कर रहा है फॉर एग्जाम्पल लेते हैं शी प्लेस विथ अ बॉल ठीक है शी द सब्जेक्ट शी इज डूइंग सम वर्ब दैट इज प्ले एंड दिस वर्ब इज हैपनिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट with a ball ठीक है this is active voice now let's say if I have to change it to passive voice how will the sentence change the sentence will become the ball यहाँ बनेगा a ball because यहाँ पे a है तो a ball was played with by her so this is how the sentence will change from active voice to passive voice all right in passive voice the subject receives the action ओके हाउ यहाँ पे हमने देखा था कि द ऑब्जेक्ट इज रिसीविंग द एक्शन ऑफ प्लेइंग ठीक है कर कौन रहा है कौन रिसीव कर रहा है कर रही है शी ठीक है और रिसीव कौन कर रहा है वो एक्शन वो वर्ब इट इज द बॉल ओके नाउ इन पैसिव वॉइस यू विल सी दैट हियर द सब्जेक्ट हैज चेंज अब हम बॉल के बारे में बात कर रहे हैं कि बॉल किससे खेला गया ठीक है was played by whom played by her her जो हमारे अब ऑब्जेक्ट बन चुकी है यहाँ पे ओके now the passive voice will always require the third form
the third form of verb, that is the past participle form of the verb. इसको हमेशा आप याद रखिएगा कि जब भी passive voice होगा, it will always require the third form of the verb. Let's understand this with the help of an example. Now, the example that's written here is that the letter, okay, the letter was written yesterday. Was written yesterday. Okay. So यहाँ पे हमने यूज करा है the third form of the verb. All right. Now, one thing that you have to keep in mind is that whenever we're using has, have, plus the third form of verb, we will be using it to denote that some activity has already been completed, some action has been completed. All right. Whereas, whenever we were using is or was along with the third form of the verb, it will show that some activity is it's happening. Okay, that some activity it's happening to the subject. It's not stopped, it hasn't happened in the past, but that activity, that action is happening to the subject. All right. Whereas जब हम has और have plus the third form of verb use करेंगे तो उसका मतलब ये है कि that activity has already been completed, that action has already been completed. All right, let's move forward. Gerunds, a new word but very easy, कुछ इसमें समझने के लिए नहीं है. जेरेंड एग्जैक्टली क्या होता है? एक जेरेंड होता है एक वर्ब, वर्ब प्लस आईएनजी, जो कि एक सेंटेंस में एक नाउन की तरह काम करता है. ओके, एक सेंटेंस में एक नाउन की तरह काम करता है, वो एक जेरेंड होता है. ओके मैम, कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं. ही इज गुड एट राइटिंग. ही, द सब्जेक्ट, इज गुड एट समथिंग. This something is what? This something is what? This something is a verb that is writing. अगर हिंदी में भी समझे तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि वो किसी चीज में अच्छा है, वो लिखने में अच्छा है. जब हम बोलते हैं कि वो किसी चीज में अच्छा है ना, व्हाट इज दैट थिंग? एंड इफ यू रिमेम्बर, हम फर्स्ट लेक्चर में गए तो हमने याद है हमने किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच, जहाँ पे हमने सीखा था एक नाउन क्या होता है. अ नाउन इज अ नेम, प्लेस, थिंग और एन आइडिया. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ही इज गुड एट राइटिंग, ही इज गुड एट समथिंग. Now that thing, that noun is what? That noun is writing. Technically, अगर हम इसमें देखें, it is verb, but now that verb is acting as a noun. All right. Another example. She is interested in learning. कि वो किसी चीज में interested, और वो चीज क्या है? That चीज is one action. What action? That is learning. So here the verb is acting like a noun. All right. And that is why it's called a gerund. A gerund is basically a verb with ing, which is acting in a sentence as a noun. So that is a gerund. Okay. So whenever we're using a verb as a gerund, we will use it, the fourth form of verb, that is verb, that is the base form with ing. That is the fourth form of verb we will be using. Okay. He is good at write. He is good at writes. Okay. ये दोनों sentences गलत है. The sentence will be he is good at writing. He is good at swimming. Okay. So हम ये grammatical errors का ध्यान रखेंगे और आगे बढ़ते हैं यहाँ से. ये मैंने एक टेबल बनाई हुई है. इस टेबल में कुछ ट्रिगर वर्ड्स हैं कि जब मॉडल्स हैं, जब इन्फिनेटिव्स है, जब पैसिव वॉइस है यूज हो रही है और जब जेरेंड्स यूज हो रहे हैं, देयर आर सर्टेन ट्रिगर वर्ड्स. ठीक है. और जब ये ट्रिगर वर्ड्स आप देख लेते हो सेंटेंस में, फॉर एग्जांपल आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए हैं या फिर आपसे पूछा गया एरर स्पॉटिंग, सो आप ये ट्रिगर वर्ड्स को ध्यान रखें अपने दिमाग में और यूज करें द रिक्वायर्ड वर्ब फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने डिस्कस करा था कि मॉडल्स या फिर जब भी इन्फिनेटिव्स यूज होते हैं, ठीक है, तो मॉडल्स अगर आपने देख लिया, टू अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है एक सेंटेंस में, तो यू नो दैट यू हैव टू यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ऑलराइट, लेट्स लुक एट द एग्जांपल्स हियर. शी कैन राइट. शी कैन राइटिंग नहीं, शी कैन राइट्स नहीं. ओके. शी कैन रिटन नहीं, शी कैन राइट. आई वांट टू राइट, passive voice. The letter was written, that is the third form of verb. And gerunds में good at writing,
या फिर जब भी आप देखते हो कि एक preposition यूज हो रहा है, ओके, जब भी एक preposition यूज हो रहा है, so you will use fourth form of word after that preposition. Okay, let's move forward and let's do this exercise. I will give you, I think, 20 seconds or maybe 30 seconds. आप आराम से करिए इस एक्टिविटी को and then we will discuss the answers. यहाँ पे मैं एक छोटा सा एडिशन कर रही हूँ यहाँ पे. The verb is decide. Okay, let's attempt. He did not want to identify did. हमने क्या देखा था कि did के साथ हमेशा the base form of verb. So did not want to go because he has हमने देखा has के साथ हमेशा third form of verb. He has seen the movie already. ऑलराइट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होने चाहिए. आगे बढ़ते हैं, सेकेंड सेंटेंस देखते हैं. आफ्टर. आफ्टर इज अ प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन के बाद वर्ब विद आईएनजी. यहाँ पे मैंने गलती से आंसर ही लिख दिया है, ठीक है, सो इट शुड बी फिनिश, बट यहाँ पे आफ्टर फिनिशिंग हर वर्क she was chosen. She was chosen for the award. All right. Another sentence. They should. Should is what? It's a model. Model के साथ हमेशा first form of verb. They should take the bus, but they have के बाद B3, that is decided to walk. Okay. Next sentence. The window was broken by the boy who is good at. At is a preposition. At playing, because हमने बोला था कि after preposition we will use the fourth form of verb, that is verb plus ing. Fifth sentence. She has के साथ third form written. She has written 3 letters since she, जब से उसने ब्रेकफास्ट करा है तब से उसने सिर्फ 3 लेटर्स लिखे हैं. तो यहाँ पे some activity has happened in the past, so we will use the past form of eat, that is ate, since she ate breakfast. Okay, एक बार देख लीजिए अगर आपको कोई डाउट्स हैं यहाँ पे, and then we'll move forward. He did not want to go because he has seen the movie already. After finishing her work, she was chosen for the award. They should take the bus, but they have decided to walk. The window was broken by the boy who is good at playing cricket. She has written 3 letters
since she ate breakfast. All right, now let's move forward. एक और एरर स्पॉटिंग की एक्सरसाइज है. You guys have 30 seconds. You do it and then we'll discuss. All right, let's attempt this. He has been wrote 3 books since last year. Very, atpata to hear. ठीक है. Has है. Identify करो trigger word. He has been wrote नहीं. यहाँ पे हम बस लिख सकते हैं written. He has written 3 books since last year. Okay, let's move on to the next sentence. She did, identify करा, want did not want to go to the party. Did के साथ always the first form of verb. She did not want to go for the party. Okay, the stolen car was, drove नहीं होगा, third form of verb. The stolen car was driven into the river. After preposition, preposition के बाद the fourth form of verb. After, identify करो. सौ का base verb क्या है? It is see. See के साथ ing to make it into the fourth form of verb. So see becomes seeing. After seeing the movie, he has decided. Has है, has के साथ past participle form. He has decided to sleep. ओके, ये फोर्थ सेंटेंस भी हमने करेक्ट कर लिया है. फिफ्थ सेंटेंस पे आ जाते हैं. शी शुड इज अ मॉडल. मॉडल के साथ द फर्स्ट फॉर्म. शी शुड हैव completed the work before a preposition. So go बन जाएगा going. एक बार आप देख लीजिए इन सॉल्यूशंस को एंड चेक इफ यू हैव मेड एनी मिस्टेक्स. Okay, let's move ahead. Another thing that we have to take care of is what happens when there is double when there are double trigger words. Okay, जब दो trigger words है, so how do we go about it? Let's take an example. ठीक है, सबसे पहले हम example देखते हैं, फिर हम समझते हैं पूरा concept. Okay, okay. So here there are 2 trigger words. There is has. There is also being. Be. To be is also a verb, right? So what happens when we have 2 trigger words? We have also, we have has also, we have to be also. These are 2 verbs, 2 trigger words also. And how is it going to affect the verb? So यहाँ पे जब has लिखा हुआ है, has के साथ we have always seen that we have to use the third form of verb. ठीक है, यहाँ पे जो next word है that is been. Been is basically the third form of the verb be. To be का third form of verb होता है been. ठीक है, so she has been. Alright, been भी क्या है? This is the third form of verb
ओके, बीन के साथ हमेशा फोर्थ फॉर्म, बिन वर्किंग, द फोर्थ फॉर्म दैट इज वर्ब प्लस आईएनजी ऑल डे। तो एक बार हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ये है कि अगर हैज हैव प्लस बिन है, so how do we go about it? Has, have plus been plus the fourth form of verb. If you see that there are more than, there is more than one helping verb, then how do we go about it? That the helping verb immediately before the main verb takes the form has, have plus been plus the fourth form of verb. Now the has here, it has triggered the third form of the word that is to be. But been is a be verb, which therefore triggers the fourth form of verb. अब बस स्ट्रक्चर याद रखिए, ठीक है? अगर हैज हैव प्लस बिन है तो उसके बाद द फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब विल कम. ओके, शी हैज बीन वर्कड. नो, ये तो एक पैसिव वॉइस हो जाता है एंड देन somebody is working her as a machine. इसका मतलब ये निकल के आता है कि she has been worked. Okay, so you have to take care the structure that has been used, that subject plus has or have plus been, और been के साथ the fourth form of verb which is verb plus the ing. Okay, हम इसकी sentences करेंगे ना तो ये और अच्छे से clear हो जाएगा. So let's move forward. बट अब तक आप याद ये रखिए कि अगर देर आर टू हेल्पिंग वर्ब्स, देर इज मोर देन वन हेल्पिंग वर्ब, देन व्हाट हैपेंस इज दैट ये स्ट्रक्चर होता है हैज, हैव और बिन से ही क्वेश्चन आएंगे, इसके आगे नहीं आएंगे. सो आप स्ट्रक्चर याद रखिए कि हैज, हैव प्लस बिन प्लस द फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब. ऑलराइट, let's have a look at the exercise. Let's try to attempt it. Okay, 20 seconds. Have a look at the examples and try to solve. फिर उसके बाद हम answers करेंगे इसके. Okay, let's have a look at the answers now. Okay, by the time you arrive, I will have के साथ third form, so this becomes written. He did not, did के साथ first form, so he did not like the food despite, which is a preposition, despite having. अगर preposition है तो have verb plus ing हो जाएगा, so have plus ing have, having. okay, और ये eat जो है, ठीक है, more than two helping verbs हो रहे हैं, ठीक है, having, eaten, it, all right. The decision was के साथ taken, third form v3, was taken without is a preposition के आगे fourth form of verb, without consulting the manager. ठीक है, यहां तक हम श्योर कोई डाउट्स नहीं होंगे. एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड. Okay, now we have to see how the verbs change if there are hypothetical triggers such as if or would. If का मतलब होता है अगर, ठीक है. Now the structure here is that अगर if है, if के साथ कैसे change होगा? If के साथ आएगा the second form of the verb. If I, see नहीं, saw, see, V1 is see, V2 is saw. So we've mentioned here that if है, so we will use the second form of verb. If I is the subject, if I saw him, okay, subject, I would के आगे the first form of verb. ठीक है, if I saw him, if के साथ the second form of verb, I would tell him, would के साथ the first form of verb. If है तो second form of verb, would के आगे the first form of verb. If I saw him, I would tell him. Not telling, not tells. Okay. So ये चीज समझ आई. अगर हमारे पास verbs हैं that often change,
ठीक है, अगर हमारे दो ट्रिगर वर्ड्स दिए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल देर इज इफ एंड देर इज वुड. ओके, सो व्हाट हैपेंस इन दैट केस इज दैट कि जब इफ लिखा होगा तो उसके आगे जो वर्ब मेंशन होगा, दैट वर्ब विल टेक द फॉर्म ऑफ द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. इफ आई सॉ हिम, सी का पास्ट फॉर्म दैट इज सॉ, हिम आई वुड के आगे हम यूज करेंगे द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज द बेस फॉर्म. आई वुड टेल हिम. ठीक है, लेट्स प्रैक्टिस अ फ्यू क्वेश्चंस. ओके, नॉट फ्यू क्वेश्चंस बट हम देख लेते हैं. यहाँ पे कुछ इरेगुलर वर्ब्स हैं, मैंने एक टेबल बना रखी है आप लोगों के लिए, सो दैट जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं जो यूजुअली रेगुलरली पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम्स में, तो आपको समझ आ जाए कि उनका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म कैसे होता है. सो हियर वी कैन सी दैट गो, वेंट, गॉन, गोइंग एंड गोज, है ना. आगे देख लेते हैं. ईट, एट, eaten, eating, eats. Now these are irregular verbs. All right. Second group है the triple identical group. Why triple? Because the first, second and the third form they're identical. Okay. ये कुछ important जो बहुत commonly used words हैं, verbs हैं, उनके उनके बारे में दिया हुआ है. The different how they change their shapes according to the sentence. So there's V1, V2, V3, V4 and V5. Okay. Then there is group 3, जो कि कॉमन रेगुलर वर्ब्स हैं, अगेन जो हमने करी हैं. आस्क, कॉल, कुक, ओपन. ठीक है, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू दीज verbs and practice questions, and I'll see you next time. Okay, thank you.